Hey, this is Imbesat Ahmad over here. I'm founder and CEO of Filo. Today, the startup ecosystem has made it possible for you to order a product and get it delivered within 10 minutes. But in the education space, most people still wait for scheduled interactions with teachers in order to get their problems resolved. In this episode of the Founder Thesis podcast, your host Akshay Dutt is talking with Imbesat Ahmad, the founder of the disruptive edtech startup Filo. Filo is making it possible for students to connect with teachers within 60 seconds for a live one-to-one learning session. Imbesat is a serial entrepreneur in the education space, and in this conversation, he talks about building products that deliver real outcomes for students and how to scale mission-driven educational ventures. Listen on, and if you like such insightful conversations with disruptive startup founders, then do subscribe to the Founder Thesis podcast on any audio streaming app. So, born and brought up in Patna, capital city of the great Bihar. So, my father, he was a bank manager. So, when I was in school, by class 8 or by class 9, it was established कि भाई IT करना है. So, IT was like the only option जिसको achieve करके you can become something at least. और जब भी रिजल्ट आता है ना, तो रिजल्ट आता है तो फर्स्ट पेज पे सिर्फ IT लोगों की फोटो होती है. So did you come on the front page, like when you cracked? Yes, I was. तो हमारे कॉलोनी में एक टीचर थे. He was IIT कानपुर graduate. He was very well respected there. And my uncle was from NIT Patna. So my grandfather wanted, मेरे नाना wanted कि ठीक है मेरा बेटा NIT गया है, अब मेरा नाती IIT जाएगा. तो वहां से स्टार्ट हुई कहानी. So I did integrated MS in physics from IIT Kharagpur. To prepare for IIT, I first went to Super 30 in Bihar. अच्छा, this Super 30 के ऊपर मूवी भी बनी है ना? Yeah, just Super 30 movie बनी है, exactly. So all the toppers were in physics department. And I was the one who realized after getting into IIT कि I don't want to continue with physics. And I was surrounded by all the physicists. I'm sure like more than 10 people in my department, they are aspiring to win Nobel Physics Prize. I can see on your LinkedIn that you had your own business while you were still in IIT, Altair Light Solutions. Yes, so that I started with my friends from Patna only. He was my batchmate, plus we were sharing the same hostel, same wing. When I was in second year of my college, so I did a project with Bihar government where we took out a trip to very deep areas of Bihar in some very underdeveloped districts, Gaya, Aurangabad, Rohtas, Kaimur. It basically border area with Jharkhand and pretty underdeveloped, you can say. So we made a team of around 20-25 people and I was leading that and was fortunate enough to do this project with Bihar government where the idea was to aware the students about what's happening in the world and also to understand how people take education in an environment which is not just difficult, it's also very different in a lot of perspectives. So it was very insightful journey. So after those 30 days, now we realized, so there were like list of problems and then we came back and we shared all those problems with the state. तो उसके बाद फिर it struck us कि lightning was a big problem. The students were complaining कि हम रात में पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि light नहीं होती है. And at the same time, Nitish Kumar, Honorable Chief Minister of Bihar, he has launched this project of डिस्ट्रीब्यूटिंग साइकिल्स. तो हम लोगों ने इसको क्लब कर लिया. तो बंदा अगर घर से साइकिल चलाते हुए स्कूल गया एंड फ्रॉम देयर बैक टू होम, तो उस बीच में वी कैन चार्ज अ बैटरी, प्लग इट टू अ लैम्प एंड इट कैन गिव यू लेट्स से 90 minutes to 120 minutes of power backup. So our entire lighting solution was wholly dependent on that. So this would plug into the cycle and वो cycling movement को capture करके battery charge होता. साइकिलिंग मूवमेंट को कैप्चर करके वहां पर वो डायनामो से वो उसको चार्ज करेगा बैटरी को. नॉर्मली साइकिल में एक लाइट लगी होती है, अक्सर गांव में लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो रियल टाइम चार्जिंग होती थी. यहाँ पर हम कुछ नहीं किया था, हमने एक बैटरी डाल दी कि बैटरी को चार्ज कर दो और फिर बैटरी को बाद में यूज करेंगे रात में पढ़ने के टाइम पे. बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वर कंप्लेनिंग दैट वी हैव टू स्टडी अंडर इन फ्रंट ऑफ kerosene lamp and that's very hazardous, extremely hazardous. So we thought of building this. We created the prototype, we gave it also. Unfortunately we could not scale it because in India, especially when you get into hardware products, तो फिर वहां पर कॉस्ट मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा होता है. एंड देन फिर जो बैटरी की एफिशिएंसी चाहिए थी उसके लिए हमें फर्दर वी नीड टू रिकैलिब्रेट. तो मार्केट में जो बैटरीज थी वहां से हमको बेस्ट आउटपुट नहीं मिल रहा था. तो इनफैक्ट हमने चाइना से वो बैटरी मंगवाई भी थी एक अपने इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से एंड ऑल दैट वेंट इनटू पिक्चर. बट देन वही हो रहा था कि वो इकोनॉमिक्स फाइनली फिट इन नहीं हो पा रही थी which you wanted. This would be government sponsored. You were not planning to sell these, but you were planning to get the government to distribute.
डिस्ट्रीब्यूशन में गवर्नमेंट आ सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट से ऐसा कोई बात नहीं हुआ था कि गवर्नमेंट विल पे फॉर इट। तो पेमेंट हमें खुद इंश्योर करना था कि हमें बंदों से ही पैसे लेने हैं, तो वहां पर वो इकोनॉमिक्स नहीं बैठ पाई। तो प्राइसिंग इज इम्पोर्टेंट। या तो प्राइसिंग और जो आउटपुट देना था वहां पर इकोनॉमिक्स थोड़ी बैठ नहीं पा रही थी। एंड प्लस since we were in college, so it was not possible for us to take multiple trips to China and get things procured. तो वहां पर वो थोड़ा सा फिर आगे हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, but it was a great experience. So that was your first taste of entrepreneurship. Yeah, you can say yes. Parallelly फिर मैंने कॉलेज के टाइम पे ही we started this ITNs for youth also. तो वहां पर भी तो ये दोनों पैरेलली चला था उस टाइम पर, but yeah, a more of product selling perspective, yeah, this was like first taste of entrepreneurship. Yeah. And what is this ITNs for youth? This is a non-profit. It was a non-profit. It was a simple notion that people who are going to top colleges in the country, they are pretty much more aware. So all they can do is just utilize their summer breaks of first year, second year of college, because post that people become very busy. So you can just utilize those first, second year and disperse information, do counseling in your local town, village, big city, from wherever you are. So the whole model was that they were creating a team of smart people who were, it was named ITNs, but it was not specifically only for ITNs. It was people who are going to NIT, people who are going to, let's say, law college, people who are going to NIP. Any tier one. Yeah, any tier one college. And we will create a platform where we were actually conducting workshops. So under ITN Studies, we conducted workshops across different states and towns. And yeah, it was simply counseling awareness program for class 8 to class 12 students. And this was like a volunteer run kind of initiative. Yeah, completely volunteer, yes. Did you, when you graduated from IIT, did you sit for campus placements? Like what happened then? So campus placement normally happens in December when you are going to start your pre-final year. So campus placement में बैठना it's more like a festival. So job लेनी है कि नहीं लेनी है आगे, campus placement में तो सारे बैठ जाते हैं, उसमें नहीं भी बैठेंगे तो you are with your friends. Yes, definitely I sat for it. I got placed. तब उस टाइम पर housing.com was very famous. It's very hot startup. Huh? Yeah, very hot startup. तो housing.com में I got, I think, business development role was there. तो वो हो गया था. So that was basically just a checkbox. I told mom कि हाँ job लगी, and then mom was like ठीक है आप करो जो करना है. But you didn't join क्या? No, I did not join. Actually, join का plan भी नहीं था. Ideally, I should not have said, but फिर वो दोस्तों का प्रेशर होता है कि नहीं यार ज्वाइन तो बैठ तो जाओ ही, प्लेसमेंट तो ले ही लो. तो मुझे अच्छे से याद है जिस दिन, so December 1 it starts. तो December 1 की रात को I was helping 3 of my friends do the case studies. And fortunately, in the next day, I think 2 of them got through. And then housing.com came in. So I was like, चलो ठीक है housing.com में देखते हैं. तो फिर I also got through. Those two, obviously, they continued their job. बाद में फिर उन्होंने multiple jobs बदली. Now one of them is actually working with me at Filo. And then, but I was mentally prepared कि I don't want to continue with any job. I will continue with Rise. क्योंकि Rise already मैंने कश्मीर में build कर लिया था उस time पे. What is Rise? So Rise basically, so this stint of ITNs for youth when I was doing this, when I was in Bihar, when I was in Jharkhand, तो उस टाइम पर किसी ने कहा कि there is a similar problem in Kashmir. Why don't you go and explore there? Because there are students who really need a lot of aspiration, who really need a lot of, can say, support, motivation, guidance, whatever you call it. Why don't you go and explore it? I was like, fine, sure. So it was my summer break after second year. So my dad took us to Ladakh for a trip. For a family trip. And before that, I was in villages of Bihar. और उस टाइम पे मुझे सुन लिया था मैंने कश्मीर. Then I look into the map. I was like, okay, Kashmir looks very close to Ladakh. So then on the way back, I was at Delhi Airport T1. I just told my mom कि I'm not coming to Patna. I'm going somewhere. I'm going to Kashmir. They were like, how, why, when this plan came into picture? I was like, मैं बताता हूँ आकर के आपको पटना में समझाता हूँ. आई विल कम बैक आफ्टर 4 days. तो somehow because अगर मैं पहले बोलता ना तो मेरे को जाने ही नहीं देते. That was for sure. तो मैंने उनको बोला ही नहीं. हम लोग लद्दाख से फ्लाइट लिए, लैंड किया आराम से दिल्ली एयरपोर्ट. अब टर्मिनल में वो अराइवल से डिपार्चर वाले सेक्शन में जाना है और मैं कह रहा हूँ कि मैं तो कहीं और जा रहा हूँ. Better to ask for forgiveness than ask for permission. Exactly. फिर मैंने क्या किया था, मैंने फिर अपने, मेरा एक दोस्त है, he is also joining Filo by the way after a long time of pursuing him. So he was my friend. He's my friend from IT खड़गपुर only. नितिन. तो नितिन जयपुर में रहते हैं. तो मैंने नितिन को कहा कि नितिन तुम जयपुर से दिल्ली आ जाओ. और फिर मेरा एक और दोस्त था, जूनियर था, आकाश. मैंने कहा कि तुम भी दिल्ली आ जाओ. वो भी पास में यूपी में कहीं रहता था. तो उन्होंने कहा क्या करना है. मैंने कहा बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिप है, दिल्ली आ जाओ, आई एक्सप्लेन यू. तो फिर मैं मम्मी को रवाना करके मैं फिर हम लोग भागे पुरानी दिल्ली. उस टाइम पर उबर भी उतनी नहीं होती है. तो उस टाइम पर लॉजिस्टिक्स वाज एक्चुअली अ बिग टास्क. पैसे भी ज्यादा नहीं होते. तो मैंने सोचा कि सबसे सस्ता रेस्टोरेंट कहाँ मिलेगा. किसी ने कहा पुरानी दिल्ली है. मैंने कहा चलो वहीं चलते हैं. तो मैंने उनको बैठाया वहां पर. फिर मैंने उनको समझाया वी आर गोइंग कश्मीर टुनाइट. तो लाइक व्हाट? आई वाज लाइक आई एम सीरियस. वी आर गोइंग कश्मीर टुनाइट बिकॉज समथिंग इंटरेस्टिंग इज ओवर देयर फॉर अस. वी कैन रियली हेल्प आउट अ लॉट ऑफ पीपल. तो मैंने उनको मोटिवेट किया. तो शाम की बस ली हमने.
So mom asked me कि तुम कैसे जा रहे हो, बस से जा रहे हो या फिर फ्लाइट से जा रहे हो, बिकॉज ट्रेन नहीं जाती है. मैंने उनको कह दिया था उस टाइम पे कि मैं फ्लाइट से जा रहा हूँ, बिकॉज शी वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ दिस रोड ट्रिप, बिकॉज वो पहाड़ों से चलना होता है सारा. इट्स अ वेरी पेनफुल एंड वेरी रिस्की ऑल्सो, बट पैसे कहाँ थे रोड ट्रिप के. तो मैंने अपने दोस्तों को कहा कि काम करते हैं, हम यहाँ से जाएंगे इन कश्मीर, आई विल इंश्योर कि हमें कोई ना कोई स्पॉन्सर कर दे, तो हमारी रिटर्न ट्रिप जो है वो रोड से नहीं होगी, वो हम फ्लाई करके आएंगे. तो दे वर लाइक आर यू श्योर, हो जाएगा. मैंने कहा तुम चलो. तो फिर हम गए, फिर हमने रात में बस पकड़ी, जम्मू गए, जम्मू से फिर हम कश्मीर गए, वहां पर आई हैड अ लोकल फ्रेंड. तो फिर वहां पर देन आई मेट JNK Bank. Then I told them that, sir, we want to conduct awareness programs. Similar type programs I've been conducting throughout different states. Your kids require actually more than students of other states. So then they really liked it. उससे पहले जब उन्होंने सुना था कि ऐसे IIT के कुछ बंदे हैं, मैंने उनको प्रपोजल भेजा था. So they took it very lightly. They were like, someone is doing prank. ऐसा होगा ही नहीं, कौन आएगा उठ करके ऐसे बाहर से IIT का बंदा कश्मीर में पढ़ाने समझाने के लिए. बट जब मैं गया फाइनली, तो उन्होंने एग्री किया. उसी मीटिंग में, एक ही मीटिंग में एग्री किया. उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, वी विल स्पॉन्सर योर इवेंट. मैंने कहा भाई मेरा ये खर्चा है. वी डिड दैट इवेंट एंड एक्चुअली दैट इवेंट गेव मी अ लॉट ऑफ insight about students in Kashmir, and that really opened my brain and heart. Ki lot of talented students, they really had no one to guide them, and had they have received right guidance at right time, then their career trajectory would have been something totally different. तो मुझे उस 3-4 दिन में समझ में यह आ गया कि यहाँ पर अगर कोई हेल्प करेगा किसी स्टूडेंट की, तो वो स्टूडेंट के लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा. तो फॉर्चुनेटली द सेम ईयर अनदर जेंटलमैन, आई डिडंट नो हिम बिफोर, मुबीन, he's an IIT Bombay graduate. So he was a Kashmiri. So he came back to start teaching kids. And he got to know about me through media articles. I got to know about him through media articles. And then we shook hands. So from there, I thought ki now Kashmir is a place jahan par we can really make a long-term impact. So we co-founded RISE. And from there, this RISE journey started. So you co-founded it as a non-profit or what? What was was it a business or was it just a social initiative? So see, अल्टीमेटली हमें पता है कि द मोमेंट वी स्टेप आउट ऑफ कॉलेज, हमें सैलरी तो लेनी है. मुबीन वॉज ऑलरेडी अ ग्रेजुएट. Mubin graduated 2011 from IIT Bombay. So Mubin cannot do anything for free. And since it was, you can say Kashmir, so we knew कि यहाँ पर कोई बाहर से कोई VC आके तो इन्वेस्ट नहीं करने वाला है. तो हमें मॉडल ही ऐसा बनाना है जो सस्टेनेबल हो, जिसमें काफी सोशल इम्पैक्ट हो. एंड सी समटाइम्स मनी इज नॉट द ओनली रिसोर्स व्हिच यू लैक. तो देयर आर अंडर प्रिविलेज, यू कैन इवन put them in underprivileged category. पैसा है लेकिन उस पैसे का कोई सही इस्तेमाल नहीं है. You cannot find a right teacher. So we started this. Of course, a very noble, very social impact तो सामने दिख ही रहा था, but we wanted to have a decent salary for us. तो हमने we started with I think 30,000 rupees per month salary. तो हमें पता है कि कुछ तो सैलरी भेजना पड़ेगा घर पे, नहीं तो घर वाले बहुत पिटाई करेंगे. So that was the whole purpose of establishing this, कि एक सिस्टम एस्टैब्लिश हो जाए एंड हमारी लाइफ सस्टेनेबल चलती रहे. दैट वाज द ओनली मेजर चेक बॉक्सेस व्हिच यू वांटेड. How do you pay yourself this salary? मतलब, were you selling like paid workshops, paid seminars? So we started teaching. Like a career launcher and time and FitG? Like a career launcher, yes. Yeah, like a career launcher and FitG, yes. So हमारी जितनी भी वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स थे, all of them we did for free. We did thousands of seminars in last 5 years for free in different places of Kashmir. वो एक छोटे से NGO से लेकर के यूनिवर्सिटी तक हर जगह. So these seminars were like for awareness building. What all can you do after 12th? Like careers after 12th awareness building. One of them was awareness building. Couple of them were where we were even training the teachers. Couple of them we used to go and take classes, let's say once in a week or once in a month, just teaching them important topics, important concepts. Like what? Related to entrance exams? Yeah. Related to entrance exam or even related to their own school exam. See, क्या है? So when I realized that people there was a lot of rote learning. So I realized that class 10th का बंदा exam pass होकर के आ गया maths में she has got 100 marks in board exam. But if you will ask a very simple question of maths ना, वहाँ पर वो फंस जाएगा. So we started working on telling them that, dude, getting 100 marks on your mark sheet is not going to help you for the rest of your life. If you claim that you know maths, you should be able to add two numbers correctly, especially if those two numbers are fraction or they have decimals. So 2.3 plus 3.6 is the, अगर मैं ऐसे अचानक से क्लास 10th पे पूछ दूंगा किसी स्कूल में, तो बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे. एंड दैट इज द प्रॉब्लम सीप इन कर जाता है. एंड फिर इसकी वजह से यू आर नेवर एबल टू ग्रास्प हायर कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सब ठीक है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डू मैथ्स. तो हम लोगों ने काफी एनर्जी अपनी इन्वेस्ट की लेटिंग पीपल नो कि व्हेन यू आर इन क्लास 8, 9 और 10 हाउ शुड यू स्टडी फिजिक्स एंड हाउ शुड यू स्टडी मैथ्स. सो पहले क्या था कि people were studying physics the same way they were studying history. So we need to invest a lot of time and energy in telling them कि physics and history are two different things. So essentially then there were like two pillars of RISE. One was helping students in Kashmir through workshops, and the
goal was prepare them for higher education, teach them how to study, teach them fundamentals, and give them awareness of career options. And the second was a paid service, which was like a career launcher or a FitG, where you would have batches who would be preparing for the entrance exam. So it was only IT entrance, or what all were you offering? Yeah, so initially it was IT entrance. Recently we have started NEET as well. But initially it was IT entrance. किसी ने IT का नाम भी नहीं सुना हुआ था. So first you have to let people aware there is this college. तो वहां से फिर एक effort तो पहले IT की awareness पे गई. And second, when we expected them to invest 8 hours, 10 hours per day, they were like, dude, मतलब तुम लोग किस planet से आए हो? मतलब कौन करता है इतनी पढ़ाई? क्यों करने की इतनी पढ़ाई? तो पहला 1-2 साल बहुत इन्वेस्ट करना पड़ा. But then we created, तो हमें पता था कि once we create relatable role models in the society, तो उस एक को देख करके बाकी अपने आप इन्वेस्ट करेंगे time and energy. So we invested in that. We created the relatable role models and फिर उनको देख करके बाकी अपने आप फॉलो किए. थोड़ा मुझे लगता है ये सुपर 30 से इंस्पायर्ड भी है ना? Absolutely. तो मेरा पूरा जो स्टे सुपर 30 का था, तो आई हैव सीन दैट लाइफ. तो ये काफी हद तक वहीं से इंस्पायर्ड था. Super 30 was like a pure NGO kind of an initiative. What was that? Just give me a little bit of a background. Super 30 का. Yeah, Super 30 is totally NGO kind of initiative. तो वहां पर basically there are two gentlemen in Bihar. One is Mr. Anand Kumar and another one is Mr. Abhyanand. So Anand Kumar is a maths teacher and Abhyanand is a super cop. So he was basically, at that time, he was Director General of Police, Bihar, but a physics graduate, gold medalist. So I had a very keen insight in physics and very sharp brain. So together they started this. Then they started, you can say, parallel centers. So I was studying with Mr. Abhyanand. So I'm more close to him. And they would do an entrance exam and that would be like a scholarship exam. Yeah, वो मतलब बिहार का most sought after exam है. And people who score well get like a full scholarship. And they only take people on complete scholarship only. मतलब वहाँ पे कुछ पेड होता भी नहीं था. तो या तो आप अंदर हैं या अंदर नहीं है. अगर अंदर हैं तो फिर आप भूल जाइए. फिर आप बस अपनी जो किताबें वो लेकर के आइए एंड देन दुनिया को आप भूल जाइए. अच्छा, ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम था. It was a residential program, yes. So at Rise, were you doing something similar, like residential, or what were you doing at Rise? Residential नहीं कर पाए हम लोग कश्मीर में, और residential कश्मीर में करना बहुत मुश्किल है बिकॉज कश्मीर में लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशन एक अपने आप में एक अलग महाभारत है. एक्सट्रीम वेदर है, तो मतलब साल का 4 महीना 5 महीना इट्स एक्सट्रीम कोल्ड. पावर का बहुत इशू रहता था. अभी तो थोड़ा कम हो गया है, बट और स्पेशली एक्सट्रीम वेदर में तो क्या होता है कि अक्सर आग लग जाती है, तो वो वोल्टेज डाउन करते हैं एंड देन फिर लोड शेडिंग होती है. तो ये हमने सोचा कि अगर हम इसमें घुसे ना, मैं भूल जाऊंगा फिजिक्स पढ़ाना. मुझे बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेस में कितना किलो चावल है और वो चावल में कितना किलो सब्जी है और कहाँ पर कौन किसकी बेड पे पानी पड़ गया और क्या हो गया. लाइक नहीं घुस सकते भाई. वी वर जस्ट हैंडफुल ऑफ 3-4 people. Very difficult to run a hostel. And how much money were you making from this? Because you were doing a paid program, so was it sufficient enough to have some profit at the end of it, or was it just breaking even? Yeah. So it was breaking even only. So we could not make any substantial money in terms of, we can say, as a profit as founders. But after 2 to 3 years, we had a decent salary, competitive with what our friends were making in Bombay or Delhi. So that was like good enough. So as far as I had enough money to tell my mom कि देखो मेरा जो दोस्त दिल्ली में बैठा है ना, मैं भी इतना ही कमा रहा हूँ. Because उनको टेंशन हो जाती है कि घर वाले की सारे रिश्तेदार कह रहे हैं कि आपका बेटा IIT गया था, सुपर 30 भी गया था, अभी क्या कर रहा है, बच्चे को पढ़ा रहा है, क्या मास्टर बन गया है, मास्टर साहब बन गया है, टीचर बन गया है, क्या कर क्या रहा है. मतलब it was very difficult for her to explain things. So I invested in my students for foreign university exams through SAT. Some of my students got into Pennsylvania, got into Princeton. Today a couple of them are in Cambridge, NYU. तो मैंने कहा एक काम करो, ये फोटो लेकर के अपने रिश्तेदारों को दिखाओ. न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ गया होगा with and न्यूज़पेपर में आर्टिकल. तो so media has always been very kind with our work in appreciation, because so media has played a very important role in letting people aware, because we don't have distribution channel. So letting people aware, using these people as role models. So वहाँ से a lot of things changed. So then what changed? Like, why aren't you just still running Rise only? मतलब वो Rise के आगे next step कैसे आया फिर? तो Rise में जितने भी मतलब kind of, you can say, the innovation जो हम कर सकते थे, वो majority हो गए. 2000, क्योंकि I was working in Rise since 2013 when I was in college. Then 2015 I graduated. वहां से लेकर के till 2019 मतलब काफी innovation हो गया. 2019 में क्या scale था आपका? How many students were you teaching in a year? Somewhere around, I think, 1500. So you had a pretty big center, like one single center में 1500. Yeah, so pretty big center. It's a nice, if you'll Google, you'll find it's a nice 7-story tower which we had taken on rent. So it's a very beautiful state-of-the-art building. Basically, आपका campus ही था एक तरीके से, like you had your own campus. हाँ, एक पूरा campus था with around 20-25 IITians as faculty member there. We were catering to around 1500 students. And your turnover would have been a couple of crores. Yeah, a couple of crores, yeah.
सो वी वर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ये 1500 से कभी भी ये 15,000 नहीं होगा. Yeah, वो कश्मीर मार्केट will not have such a large. और प्लस द वे हाउ कोचिंग इंडस्ट्री वर्क्स और फॉर हाउ एनी इंस्टीट्यूट वर्क्स, कभी भी अगर एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा तो या तो क्वालिटी बहुत डिग्रेड होगी या फिर वो मॉडल ही कोलैप्स कर जाएगा. वो मॉडल में आप पढ़ा ही नहीं सकते, इम्पैक्ट क्रिएट ही नहीं कर सकते अगर आपको इम्पैक्ट पे जाना है उस स्केल पे. दैट स्केल इज सिंपली नॉट पॉसिबल. सो वी मेड अ पैक्ट अमंग आवरसेल्व्स बिटवीन मी, Mubin and Salman. So Mubin and Salman are my co-founders at Rise. But just for certain few more crores, we are not going to compromise the quality. क्योंकि वो focus बनता ही नहीं है फिर. So last year also, despite it was COVID, but I think we had around 16 selections in IIT, which is a major thing. मतलब आपको वैसे शायद दिल्ली और बॉम्बे में वो बड़ा नंबर नहीं लगेगा, बट कश्मीर के पर्सपेक्टिव में 60 students going into IIT, it's a great achievement. So we held our nerves even during COVID, and we got the success. तो वो चीज, सो वी न्यू दैट कि अब एक स्केल हिट हो गया है एंड इसको मेंटेन रखना है. ऑपरेशंस के लेवल पे थोड़ा इनोवेशन करते रहेंगे हम लोग. बाकी वर कश्मीर वही थी, कश्मीर में मतलब लोकल इश्यूज बहुत सारे आते रहते हैं, बट समहाउ वी वर फाइन विद दैट, हमें उनको मैनेज करना आ गया था. सो नाउ आई रियलाइज्ड कि अब यहाँ से अगर मुझे अपना स्केल बड़ा करना है, मतलब व्हाट आई एम डूइंग. सो देन आई थॉट कि एक दिन मेरे को रियलाइज हुआ, सो इन इंडिया देयर आर somewhere around 250 million students and I have been teaching for almost 10 years. क्योंकि पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया था जब मैं खुद सुपर 30 में था. तो अपने दो दोस्तों को तो मैंने साथ में पढ़ा करके हम इन्हें एक साथ ही आईटी निकाला. तो पढ़ाने का सिलसिला मेरा तब से शुरू हो चुका था. तो आई थॉट कि जो मेरा इनसाइट जो मैंने डेवलप किए हैं व्हाइल टीचिंग, नाउ इट्स टाइम कि इसको एक टेक प्रोडक्ट में डाला जाए और इसको स्केल किया जाए, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो बियॉन्ड इंडिया. तो वहां से फिर आई थॉट कि अब नाउ इट्स टाइम कि साइलेंट पार्टनर हो जाता हूँ राइज में. Now I think I should focus my personal time in building a tech product which is more scalable. क्योंकि सामने मुझे दिख रहा है कि there are 250 million students in India जो वही 2000 साल पुराने पैटर्न से पढ़ाई कर रहे हैं, एंड मुझे उसमें बहुत सारे इश्यूज दिखते थे. सो आई हैव बीन फॉलोइंग ऑल दीज टेक इनोवेशन जो भी मार्केट में हो रहे थे. सो आई थॉट कि मेरे भी कुछ आइडियाज हैं, इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट देम. What did you see as the gap जो बाकी edtech कंपनीज नहीं कर रही थी? मतलब वो अपॉर्चुनिटी कहाँ पे दिखी आपको? सो लर्निंग में दो पार्ट होता है अगर एक स्टूडेंट की जर्नी आप देखें तो. वन इज द डेटा ट्रांसफर पार्ट, जब बच्चा क्लास में होता है, ठीक है, और जब बच्चा खुद से घर बैठ के पढ़ाई करता है तो दैट इज द डेटा प्रोसेसिंग पार्ट. स्कूल क्या कराते हैं? डेटा ट्रांसफर. कोचिंग क्या करता है? डेटा ट्रांसफर. बाकी जितने टेक्स्ट थे ऑल ऑफ देम वर डूइंग डेटा ट्रांसफर ओनली. क्लासरूम की जगह पर ने डिजिटल बोर्ड क्रिएट कर दिए, ये वीडियो हो गया. हाँ. या वीडियो हो गया प्री रिकॉर्डेड. बच्चा पेपर पे टेस्ट देता था, उसकी जगह पर अब टेस्ट जो है वो टैबलेट पे दे रहा है. ग्रेट, नाइस यूज ऑफ tech and nice use of hardware solutions. But all of them again simply doing the same thing which was being done in a normal average classroom. Just of course in a more fancy way, in a more you can say in a better explanatory way. वहाँ पर एक rewind button का option होता है. You can go and listen to it again and again, of course. But at the end of the day, it was again data transfer. So there was this massive white space left in the data processing part, which you can in simple words say the learning part. So Filo we built as a learning solution. So Filo is supposed to be in hands of students or anyone who wants to learn anything at any point in life. So this was the gap which we identified and then we started working on it. मतलब ये थोड़ा वेग है कि वो डेटा प्रोसेसिंग एरिया को आप फिक्स करना चाहते हो. वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट आइडिया होगा ना. वो मैं स्पेसिफिक देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका कोई कजन है, स्कूल गया हो, अभी शाम को घर बैठेगा, शाम को 7 बजे पढ़ने के लिए प्लान करके बैठेगा, मुझे 2 घंटा आज सेल्फ स्टडी करनी है. विद इन 15 मिनट्स लेट्स से गेट स्टक एट समथिंग. उसी टाइम पर पूरे दिल्ली, पूरे बैंगलोर, पूरे बॉम्बे में hundreds of thousands of students who gonna sit for self study will get stuck at one or the other thing after every 15, 20, 25 minutes, because that time you are processing things which was taught to you in your class maybe the same day or maybe a month before or maybe a year before. A lot of time these class 12 students, they need to revise what was taught in class 11th because IIT and NEET is going to ask both the years. So at that time you are doing this data processing. So at that time you are totally left alone. तो हमारा जो एडुकेशन मॉडल है दैट इज प्रीटी लीनियर. वहां पर एक बेसिक एक्सपेक्टेशन ये है कि आप क्लास अटेंड किए, मतलब आपको समझ में आ गया, आप घर जाइए, उसको सीखिए और आगे बढ़ जाइए. अनफॉर्चुनेटली इट वर्क्स ओनली विद टॉप 2 to 3% ऑफ द क्लास. फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल इट डजंट वर्क. जो कि व्हेन आई वाज टीचिंग एट राइज तो क्या होता था, फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ यू पिक क्लास 12, फर्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैट्स. मैंने पढ़ाया इलेक्ट्रोस्टैट्स, मुझे लगा अच्छा पढ़ाया मैंने, आई एम one of the most looked after teacher in the country. Student भी खुश. 5 महीने के बाद when I was teaching let's say electromagnetic induction, तो मैंने ऐसे ही पूछा कि अच्छा okay tell me how it's going, did you practice this question? एक स्टूडेंट बोला सर अभी तो हम कैपेसिटर ही सॉल्व कर रहे हैं जो आपने 3 महीना पहले पढ़ाया था. I was like why? उन्होंने कहा सर टाइम लगता है. I was like मतलब तो सर पहले तो
जो थ्योरी है उसको समझना पड़ता है। आपने समझा दिया क्लास में, अच्छा लगा, उस टाइम पर सब कुछ क्लियर लगता है, लेकिन जब हम घर जाते हैं ना तो एक लेयर गायब हो जाता है। वो जो आपका एक सपोर्ट है ना क्लास में, वो लेयर गायब हो जाता है। तो रियलिटी स्टेप होती है कि भाई अब यू आर ऑन योर ओन। तो क्लास के 50 to 60% बंदे तो थ्योरी की बाहर तो बढ़ ही नहीं पाते, दे रिमेन स्ट्रक विद थ्योरी। मतलब जो क्लास में टीचर ने लिखवाया कॉपी में, अगर सिर्फ उतना ही उनको मोटा मोटी दिमाग में है, दे आर हैप्पी विद दैट, क्योंकि उसमें ही उनको महाभारत लगती है। कुछ परसेंटेज होते हैं जो वो एंड अप विजिटिंग टू द एग्जाम्पल्स जिसके सॉल्यूशन गिवन होते हैं, एंड वेरी फ्यू जो महावीर होते हैं दे एंड अप डूइंग न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब 20 पेज का थ्योरी है, लेट्स से 50 पेज की थ्योरी है, बंदा उसको 1 महीने के बाद रिवाइज कर रहा है, घर बैठा हुआ है रात के 8 बजे। दे वर लाइक कि सर उस टाइम अगर आप होते ना हमारे घर पे तो बहुत फास्ट हो जाता। मैंने कहा बॉस मैं तो नहीं रह सकता हूँ आपके घर पे एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। तो वहां से चीजें मुझे स्ट्राइक करने शुरू की कि यार नो मैटर आप कितना भी अच्छा पढ़ा दो, अल्टीमेटली सीखना उनको खुद है और उनकी खुद की स्पीड पे सीखना है, विच इज वेरी डिफरेंट। तो आई वॉज इंटीग्रेटेड MS फिजिक्स IIT खड़गपुर, मेरी अपनी की स्पीड है, और मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि भाई 1 साल में इतना पढ़ाना भी है। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में एक तो सिलेबस बहुत ज्यादा ही लंबा है, ना ही सिर्फ स्कूल लेवल पे बल्कि कॉलेज लेवल पे भी। मतलब हम लोग कंपेयर करते थे कि MIT के सेकंड ईयर का कोर्स क्या है, तो पता चला MIT के जो 2 सेमेस्टर का कोर्स है वो हम लोग खड़गपुर में IIT में 1 सेमेस्टर में निकाल रहे हैं। टू मच कवरेज। तो मैं तो फिर भी अपने आप को टॉप 1% टीचर में काउंट करूंगा कंट्री के। एक एवरेज टीचर के लिए तो प्रेशर यही रहता है कि सिलेबस कंप्लीट करना है। वो बेचारा कहाँ से ध्यान दे पाएगा कि मेरे क्लास में 60 जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 70 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उनमें से कौन कितना समझ पा रहा है। तो समझना अल्टीमेटली स्टूडेंट को खुद से ही है घर पे। तो वहां से ये पूरा गेम स्टार्ट हुआ फिलो का। If you like to hear stories of founders, then we have tons of great stories from entrepreneurs who have built billion-dollar businesses. Just search for the Founder Thesis podcast on any audio streaming app like Spotify, Gaana, Apple Podcasts, and subscribe to the show. So you wanted to build a learning assistant basically, जो while the students are doing self-study, if they get stuck, if they have a doubt, then there should be a product which gives them the answer or helps them get unstuck instantly. That was the goal. Yeah. So we created first time in education industry, we created and we put up education as a service. For example, Zomato gives you a service, Uber gives you a service. Even before Uber, there were drivers, there were cabs, but it was not as a service. आपको रात को 2 बजे कैब चाहिए, गारंटी नहीं कि मिलेगी। यू विल मेक अ फोन कॉल टू अ फ्रेंड एंड ही विल कॉल समवन। ड्राइवर का मूड होगा तो आएगा, मनमानी पैसे मांगेगा। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट एग्जिस्टेड इन एजुकेशन इंडस्ट्री। सो वी क्रिएटेड एजुकेशन एज अ सर्विस, जहां पर मुझे एक हेल्प चाहिए, अभी चाहिए, और इस बंदे से चाहिए, और मैं मेरे पढ़ने का ये तरीका है तो मैं अपने तरीके से पढ़ूंगा। आपके पास अगर कोई टीचर है जो मुझे मेरे तरीके से पढ़ा दे तो कनेक्ट कर दो इमीडिएटली, मैं सीख लूंगा और आगे बढ़ जाऊँ। सो वी फर्स्ट टाइम वी ब्रॉट दिस सर्विस concept in education. You wanted to bring like a Uber kind of an approach where you aggregate teachers all over the country, make them available live on demand. जैसे Uber में on demand taxi है, तो वैसे ही यहाँ पे on demand teacher. That was the idea. To be frank, initially हम अक्सर लोगों को कहते थे कि we are Uber for education, but वो हमने फिर कहना बंद कर दिया, we are more of an Amazon for education. But हाँ, when we thought कि फूड डिलीवरी हो सकती है 10 मिनट में, ग्रोसरी डिलीवरी हो सकती है, उस टाइम पर तो नहीं था 10 मिनट, बट टीचिंग की डिलीवरी का टैट था रफली मोर देन एन आवर। और मोर देन एन आवर में आपको टीचर नहीं मिलता था, आपको एक सोल्यूशन मिलता था। एक क्वेश्चन डाल दो कहीं पर तो कोई सॉल्व करके दे देगा। ये बात आई थिंक डाउटनेट was doing something like this. वन प्लेयर वहां पर भी हैं, और भी हैं, कुछ यूएस के भी प्लेयर्स हैं। इंटरसॉल्व साउथ ईस्ट एशिया में अपने दोस्तों का है, कांडा, स्नैपास। तो सोल्यूशन मिलना एक चीज होती थी। वैसे नहीं, सोल्यूशन तो यार हर जगह अवेलेबल है, गूगल करो, गूगल सारा सोल्यूशन कहीं पर नहीं है। वी सेड वी विल प्रोवाइड यू अ टीचर, क्योंकि सोल्यूशन देखने के बाद भी सोल्यूशन से सीखने की जिम्मेदारी स्टूडेंट की होती है। तो वो तो जो किताब में एग्जांपल्स हैं वो में भी सोल्यूशन है। बच्चों को अगर सीखना हो तो वहीं से सीख जाएगा। वो जो इतनी मेहनत कर रहा है, यूट्यूब पे आ रहा है, गूगल पे जा रहा है, 4 दोस्तों को फोन लगा रहा है, वो इसलिए क्योंकि कोई और उसको सिखा दे, क्योंकि हर के बस की बात नहीं होती है खुद से सीख लेना। सो दैट्स व्हाई अ ह्यूमन इंटरवेंशन वाज रिक्वायर्ड। सो वी ब्रॉट इन अ human layer who takes the responsibility of making the student learn or understand something at that point of time. तो इस आइडिया को आपने, I want to hear the journey. You had this idea that on-demand teacher access to help you understand. Instant live tutoring, we call it, yes.
हाँ, इंस्टेंट लाइव ट्यूटरिंग। तो इस आइडिया की जर्नी कैसे हुई? यू मस्ट हैव हैड वर्जन 1 एंड देन यू वुड हैव रियलाइज कि आपके कुछ assumptions गलत है, उसके बाद आपने प्रोडक्ट को फर्दर इम्प्रूव किया होगा वर्जन 2 में। तो आई वुड लव टू हियर दैट होल एवोल्यूशन ऑफ व्हाट वर्कड, व्हाट डिड नॉट वर्क। तो आई वाज ब्रेनस्टॉर्मिंग। पहले तो मैंने अपने कश्मीर के ही 20 स्टूडेंट से बात की कि तुम पक्का हो कि अगर मैं तुम्हें अपना परमिशन दे दूं कि रात को 10 बजे कॉल करना है तो तुम कॉल करोगे? बोलते सर एकदम करेंगे। मैंने कहा अगर मान लो मैं नहीं, मुझ जैसा कोई और। बोलते सर वहाँ पे भी करेंगे। मैंने कहा चलो मुझ जैसा भी नहीं, थोड़ा सा कम लेवल का, एनआईटी का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तुम्हारा, सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, राइस के ही कोई टॉपर स्टूडेंट है, एलमनस है। बोलते सर हाँ उसको भी कॉल कर लेंगे। तो वो मैंने स्टडी की 10-20 स्टूडेंट के साथ, वो हो गया कंप्लीट मेरा एक हफ्ते में। मैंने फ्लाइट पकड़ी, आया मैं दिल्ली में माय फ्रेंड एंड ब्रदर शादमान अनवर। तो शादमान वाज माय सीनियर फ्रॉम सुबह 30 टाइम, ऑल्सो माय स्कूल सीनियर। वहां से ही वेंट टू आईटी दिल्ली। ही ऑल्सो डिड इंजीनियरिंग फिजिक्स बट अ प्योर कंप्यूटर गीक एंड इंजीनियर इन ट्रू सेंस। मतलब उसकी घर की 50% चीजें वो खुद बनाते हैं। ओके ओके। अपनी स्कूटर खुद बनाई हुई है। घर पे उनके 3D प्रिंटर रखा हुआ है। मतलब सारी दुनिया एक नॉर्मल मास्क पहन के घूमती थी, उन्होंने अपना बेन का मास्क बनाया था 3D प्रिंटेड कोविड के टाइम पे। ट्रू इंजीनियरिंग मार्वल मतलब। तो ही वाज वर्किंग एट मैजिक पेन स्टार्टअप इन गुड़गांव। तो मैंने कहा कि बात करनी है, तो उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा बहुत जरूरी है। मैंने कहा ड्राइव पे चलो। तो उनके साथ गए ड्राइव पे। फिर मैंने उनको प्यार से समझाया। मैंने कहा भाई जॉब छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा आइडिया बता रहा हूँ, जॉब छोड़नी पड़ेगी, पहले बताओ तभी आइडिया बताऊंगा मैं। तो फिर मैंने उनको आइडिया बताया। हम लोग की आराम से 2-3 घंटे की लंबी ड्राइव हुई और उसी 2-3 घंटे में ही डाइजेस्टेड इट एंड ही प्रोसेस इट एंड ही वाज लाइक लेट्स डू इट। ही वाज कन्विंस्ड इनफ टू लेट्स जस्ट डू इट इन वन मीटिंग। तो उनकी सिस्टर की शादी थी घर पे, तो ही वाज लाइक यार मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं पहले शादी निपटाता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो पैरेलली तो हमने पहले क्या किया, हमने पहले स्टूडेंट से बात करनी शुरू की। तो मैंने सोचा कि हम पायलट तो राइज में ही कर सकते हैं। तो वहाँ पर फिर प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ। इट वॉज डिफिकल्ट, मतलब इट वॉज एक्चुअली डिफिकल्ट इंजीनियरिंग। इंस्टेंट कनेक्ट करना वीडियो कॉल पे। तो रोज ही रात को 10 बजे हम बैठते थे प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए, 12-12:30 हो जाता था और रोज प्रॉब्लम होती थी। और ऐसा ऑलमोस्ट 1 महीना चला, फिर जाके चीजें थोड़ी सी स्टेबल होनी शुरू हुई। तो उस टाइम पर मैं कश्मीर वापस चला गया था। तो फिर पहले मैंने क्या किया, मैंने अपने राइज में स्टूडेंट को कहा कि 10 स्टूडेंट को दिया मैंने कि एक ऐप है, इस पर इंस्टॉल करो और सुबह के 10 से 12 बजे तक सिर्फ 2 घंटे के लिए जब भी तुम पढ़ाई करते हो कुछ सवाल अगर होगा तो पूछना। वो एक छोटी सी टेस्टिंग की हम लोगों ने 2-3 दिन, वो थोड़ा सा स्टेबल हुआ। फिर हम लोगों ने इसी 10 स्टूडेंट को 100 कर दिया। बट आपने वो ट्यूटर्स कैसे ऑनबोर्ड किए? वही बताने जा रहा हूँ। तो द फर्स्ट सेट ऑफ ट्यूटर्स, पहले 15 ट्यूटर लगभग, 15-20-18 ट्यूटर लगभग, वेर बेसिकली माई स्टूडेंट्स हु वर स्टडिंग इन आईआईटीज एंड एनआईटीज। तो मैंने मीटिंग एक बुलाई, अपने 3 आईटी के बंदे हैं। आईटी इत्तेफाक से उनमें से 2 आईटी खड़गपुर में ही है और एक अभी आईटी रुड़की में। देयर इन थर्ड ईयर ऑफ द कॉलेज राइट नाउ। तो मैंने कहा कि भाई ये टीम बनानी है, तुम लोग अपने नेटवर्क से लगाओ, जहां पे राइस के अलमनी बैठे हैं उन सबके साथ एक मेरी मीटिंग कराओ। वी विल जस्ट हैंड पिक 4-5 ऑफ देम और एक बेसिक स्टाइपेंड भी दे देंगे। सो दे वर लाइक सुपर हैप्पी। सो इट ऑल स्टार्टेड यू कैन से फ्रॉम राइस फैमिली इनिशियली। तो ये 20 लोग ऑनलाइन रहते थे। इनको इंस्ट्रक्शन था कि भाई एक हम लोगों ने प्रॉपर एक कैलेंडर शेयर कर दिया था कि ये बंदा इतने बजे से इतने बजे तक ऑनलाइन रहेगा, फिर ये इतने बजे से इतने बजे तक, क्योंकि हम लोगों ने टाइमिंग को 10 से 12 को फिर बढ़ा करके हम लोग ऑलमोस्ट 10 से 10 कर दिया। तो आई टेल यू आई हैव बीन लिटिल यू कैन से एम्बिशियस, थोड़ा सा एग्रेसिव रहना इज समवेयर अ पार्ट ऑफ हाउ आई ऑपरेट। That's like 10 PM to 10 AM या 10 AM to 10 AM to 10 PM। पहले वही था, एक रोस्टर पब्लिश था और लगभग अपने 20 राइस के ही एक्स स्टूडेंट्स थे जो कि मोस्टली सारे आईआईटीज में थे बैठे हुए। तो वो लोग ये सेशन देखते थे। तो फिर राइस के बाहर से फिर बाकी स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, मैंने लिस्ट निकाली कि पिछले 7-8-9 सालों में मैंने कौन कौन से बिहार के कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के फिजिक्स पढ़ाई है एंड हाउ मेनी टीचर्स आर देयर जो मुझे अच्छे से जानते हैं। इट्स टाइम टू गिव देम अ कॉल एंड से हाय। तो मैंने उनको बताया कि एक ऐसा प्रोडक्ट है एंड वो सारे लोग चूंकि ऑनलाइन ही पढ़ा रहे थे कोविड के टाइम पे, तो दे ऑल रियली लाइक्ड इट कि हाँ ये तो इट्स ग्रेट। मैंने कहा आप अपने स्टूडेंट्स को बस बता दीजिए। तो वहां से मुझे लगता है कि डेफिनेटली 50 से ज्यादा टीचर्स होंगे जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बताया और वहां से देखते ही देखते कुछ दिनों में हमारे लगभग अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स आ गए प्लेटफॉर्म। and this was free. You were not monetizing ना इस स्टेज पे तो फ्री। हाँ उस टाइम पर इट वॉज फ्री। बट जैसे ही ये हुआ then Minister of Education got to know about this, and Minister of Education and then Minister of HRD, Mr. Pokhriyal Saab, he also tweeted it from his personal account and then Minister also tweeted it। तो अचानक से मैं देख रहा हूँ कि इतने नंबर ऑफ एक्सपायर्ड सेशंस क्यों बढ़ गए, अचानक से क्या हुआ, कोई क्लू ही नहीं हो रहा है, बिकॉज अचानक से डिमांड बढ़ गई। तो फिर शादमान ने सर्च किया ऑनलाइन एंड देन ही वाज लाइक कि डूड देयर इज अ बिग गेम हैपेंड। आई वाज लाइक ओ माय गॉड। फिर रातों रात तो पहले मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगता है कि उस रात मैंने
ऑलमोस्ट 7 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक मैं फिलो पे ऑनलाइन था। तो मैं खुद भी रहता था ऑनलाइन, लेकिन मैं बीच में थोड़ा टाइम निकाल करके बाकी चीजें मैनेज भी करता रहता था, क्योंकि मुझे दोनों ही चीजें करनी है। वहां से लेकर के ऑलमोस्ट 1 महीने 2 महीने तक मुझे लगता है कि मुझे हर रोज 8 से 12 घंटा खुद ऑनलाइन रहना पड़ा होगा, क्योंकि जब सामने सेशन रिक्वेस्ट आ रही है और वो मिस हो रही है ना, तो फिर वो ऐसे दिल पे लगता था कि यार ये मिस नहीं होना चाहिए। मैंने कहा चलो बिजनेस वगैरह सब ठीक है, लेकिन यूजर एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, मैं इन्वेस्टर से बाद में बात कर लूंगा, लेकिन फिलहाल ये कॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सेशन रिक्वेस्ट लेना शुरू किए। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने लिंक्डइन में डाला कि भाई जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, दोनों थिंक यू कैन हेल्प आउट पीपल, इट्स टाइम फॉर यू टू बिकम द हीरो ऑफ द कंट्री, बिकॉज कोविड है, बच्चों के पास स्कूल नहीं है, टीचर्स नहीं है, गाइडेंस नहीं है, यू जस्ट कम ऑनलाइन, वी हैव क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल प्रोडक्ट एंड गिव सम टाइम एंड इट रियली वर्क वेल। मतलब हमारा मुझे लगता है 1 महीना उसी पे चला, बट देन ऑफ कोर्स इट वाज नॉट सस्टेनेबल। मतलब आप किसी को अच्छा फील करा करके उससे ज्यादा इनपुट नहीं करा सकते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इफ दे आर नॉट अर्निंग तो वो उतना ही मतलब टाइम देंगे। हाँ, मतलब वो मोटिवेशन कितना ही रहेगा। एंड प्लस कोई ऐसा कोई बड़ा ब्रांड चैनल कोई डिस्ट्रीब्यूशन भी काम नहीं कर रहा था हमारे साथ जो इसको परकुलेट करता भी। मतलब मैं एक इंडिविजुअल लेवल पर कितना ही फेसबुक और लिंक्डइन के थ्रू लोगों को जोड़ पाऊंगा। बट एनीवे इट रियली वर्कड एंड आई विल ऑलवेज बी इन डेट टू एवरीवन हु सपोर्टेड अस इन दैट इनिशिएटिव इन दोज अर्ली डेज। आज ही मेरे पास उन सबकी लिस्ट है और आज ही मुझे उन सबके मेल्स आते रहते हैं कि व्हेन दे हियर अबाउट फिलो, व्हेन दे हियर अबाउट हाउ वी आर नाउ हेल्पिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट, उनके मेल आते रहते हैं मुझे कि इम्बेसात मैंने सेशन लिया था, मुझे तभी लगा था इट वाज सो अमेजिंग, तो इट वाज फील्स ग्रेट। बट देन फिर मुझे लगा कि अब तो पे करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। तो पहले तो हम अपने ट्यूटर्स को पे कर रहे थे कि मंथली इतना पे कर देते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था कि ठीक है आपने मंथ का पे फिक्स कर दिया, बट वो एक्चुअल में जितनी उसको रिक्वेस्ट आ रही है वो एक्चुअल में पिक कर रहा है कि नहीं, वो नोस। स्किन इन द गेम नहीं है अगर उसको फिक्स मिल रहा है। एग्जैक्टली तो वो तो मैं को पकड़ भी नहीं सकता हूँ। तो जो नंबर ऑफ सेशन रिक्वेस्ट मिस होते थे वो हमारे लिए लिटरली नाइटमेयर होता था। तो आई वाज लाइक कि बॉस ऐसे नहीं होगा। मैंने कहा इसको पर मिनट मॉडल पे कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो क्विकली शादमान did the you can say created a model जहाँ पर I did the maths, he created the model and then he was like कि इसको हम पर मिनट पे बिलिंग करेंगे। तो जैसे ही पहले महीने की हमने बिल पे की ट्यूटर्स को, I was like boss where are all my friends who are sitting in VC circle। क्योंकि एक तो कोविड की वजह से राइज में मैं खुद भी सैलरी नहीं ले रहा था बिकॉज वी आर होल्डिंग कैश फॉर आवर एम्प्लॉइज कि हमें ट्यूटर्स पेमेंट करनी है। तो वहां पर ऑलरेडी एक कैश फ्रेंड चल रहा था एंड मुझे ट्यूटर्स पेमेंट करनी है और मैं शादमान से प्रेशर कर रहा हूँ कि तुम जॉब छोड़ो, क्योंकि जब तक तुम जॉब छोड़ोगे नहीं तुम उतना कोड नहीं कर पाओगे जितना जरूरत है, टाइम नहीं है तुम्हारे पास। लाइक कि नाउ वी हैव to take some help. So I made a couple of phone calls very quickly. Like within 3 days, I think I got connected to Vaibhav Domkundwar of Better Capital. And I had a discussion, 1 hour discussion with him and he was like, let's do it. तो वहां से वो अलग बात है कि फिर उनका पैसा आने में बहुत टाइम लगा। मतलब ये हमारा क्लोज हो गया था समवेयर अराउंड अक्टूबर, बट पैसा आया था फरवरी में। बट एनीवे बट एटलीस्ट एक उम्मीद रहती है ना कि हाँ चलो ठीक है कोई तो देर कहीं से आ जाएगा। तो देन आई स्टार्टेड पुलिंग ऑफ ऑल माई little savings whatever I had. So then there is a guy who was working with Shadman, Mohit Wadhwa. So as an engineer we took him in the team and then फिर मार्च में तो रोहित आई। तो वहां से फिर द नंबर वॉज कि अब मुझे लगा कि आईटी तो हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, अब एनआईटीज में जाना पड़ेगा। एनआईटीज में गए, फिर अब टीयू दिल्ली यूनिवर्सिटीज में गए, बैंगलोर यूनिवर्सिटी में गए, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में गए, जितने भी प्रीमियम कॉलेजेस थे हर प्रीमियम कॉलेजेस को हमने गेट नॉक कर लिया एंड with just zero CAC हमारे ये ट्यूटर्स ऑन बोर्ड होते गए। सो दैट वाज वेरी बिग मोटिवेशन कि I was not spending a single money on acquiring tutors. और अब एक लंबे अरसे तक हमें स्टूडेंट को भी एक्वायर करने पे कुछ भी पैसा नहीं खर्च करना पड़ा। It was all organic, which was a great push to start with. When did you monetize students, make it paid? So we started paywall somewhere in February 2021. And उसके बाद भी organic because where it's free then आज भी हमारा 50% ऑर्गेनिक आता है, which is a great catch we have in our product. So we have created a new industry trend in terms of NPS. आप हमारे प्ले स्टोर पे जाकर हमारे रिव्यूज देखें और हमारे रिव्यूज टू इंस्टॉल का रेशियो देखें, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। reviews to install ratio क्या दिखाता है? Like how many installed users left a review? तो ये रेशियो दिखाता है बेसिकली कि how many downloads you have and then how many reviews you have got. तो अगर किसी के अगर 25 मिलियन डाउनलोड्स हैं और उस पे उसको 100 के रिव्यूज हैं या 50 के रिव्यूज हैं, हमारे 1 मिलियन डाउनलोड हैं और हमारे अगर 100 के रिव्यूज हैं, तो इट शोज कि जो यूजर्स हमारे पास आ रहे हैं वो एक्चुअल में कितना प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और वो कितने जेन्युइन है एंड वो कितने ऑर्गेनिक चैनल के थ्रू आ रहे हैं। So what is the journey for a student? Like when he signs up, then what does he do? Is there a drop down to select कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा ईयर, किस सिलेबस का and all that? या कैसे होता है मतलब? How does the matching happen? Yeah, the journey for the student is very simple. The student onboards. We ask very
few questions which are just important for students just to improve the matching. एक तो उसमें से बोर्ड है करिकुलम, दूसरा कि वो लैंग्वेज कौन से लैंग्वेज में उसके बुक की लिटरेचर लिखी हुई है, एंड देन फिर कौन से लैंग्वेज में वो बात करता है. फॉर एग्जाम्पल मैं हिंदी बोलता हूँ, लेकिन अगर मेरे को एक फिजिक्स का क्वेश्चन, एक वो भौतिकी का अगर क्वेश्चन हो जाएगा जहां पर एंगुलर मोमेंटम हिंदी में लिखा होगा, फॉर मी इट्स फ्रेंच, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा. वी आस्क दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड देन इफ a student lets us know about language and the curriculum, post that we simply say ki dude just ask your question. And so then he puts in a question. फिर question क्या English में है या language, like Any language, because we are currently operating on 10 plus languages, and then we say that okay, just let us know कौन सा subject है और कौन सा topic है, that's it, and just hit the magic button of connect to a tutor. फिर tutor को क्या जाता है, वो जैसे Uber में होता है that it goes to 4-5 drivers and one of them can pick up. So again in our model also it goes to some 3-4 tutors, but उससे पहले हमारा algorithm ढूंढता है कि who are the best 3-4 tutor for this question and for this student. क्योंकि physics मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ और physics मेरा एक colleague कैसे पढ़ा रहा है उसमें बहुत अंतर हो जाता है. I may be good at explaining things which are more number wise. Someone else may be good at explaining things which are more concept wise. I may not be great at the entire physics. I may be just good at one topic of physics. Someone else is good at another topic of physics. Our model finds out who is going to be the most apt tutor for this kid, and then it makes a priority order of around 3 to 6 tutors, and then it pushes, and then one of them pick it up. How does your algorithm know who is good at what? मतलब वो data कैसे मिलता है? Like कौन से tutor का क्या strength है? So every session is monitored, recorded, and after every session, both the tutor and the student get the opportunity to give a feedback about each other. So it's very, you can say very close to accurate, because it's not one person who is judging a tutor. A tutor is being assessed by hundreds and hundreds of students. And on the basis of their feedback and on the basis of then their background, we believe that, okay, which kind of tutors fit in or match with which kind of students. Because those students who are writing feedback for a particular tutor are also getting feedback from other tutors as well. So that gives us immense power to dive very deep and write our algorithm on basis of these nuances and improve our matching. The more a student utilizes the platform, the better will be the matching automatically. Yeah, because that ratings data is getting richer, so you'll be able to do better matching because of that. Okay, got it. And what is the pricing for a student? So definitely we are like over subsidized in terms of pricing, and also one of the daring ones to add pricing in Edtech, because India mein, apart from the unicorns, nobody is able to actually add pricing in Edtech, but somehow we did that. So abhi hamari pricing is like for 750 rupees, you get unlimited number of sessions in a month. Which makes it like a frictionless journey for the student. Then उसको सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे कितने minutes consume हो रहे हैं. क्या मतलब हमारी सब्सक्रिप्शन इज लाइक अ नो ब्रेनर, मतलब इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है किसी को. उसके लिए कोई फ्रिक्शन नहीं है कि मैंने इतने मिनट यूज कर लिए, इतने मिनट बचे हैं मेरे एंड ऑल दैट. एंड व्हाट डू यू पे योर ट्यूटर्स? दैट मस्ट बी अ टियर्ड payment. No, some like top tutors must be getting paid more. Yeah, that has got different bands. It moves in the ballpark of around 200 rupees per hour types. And these tutors are mostly like students in college. No, तो actually वो जर्नी वाली डिस्कशन हमारी बची रह गई. So मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत, बट ये तो सिंसियर नहीं है. तो मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, मैं अपने आप को पीछे लेके जाता था. मैं सोचता था कि यार ठीक है, मेरे इस महीने मैंने 5,000 रुपये कमा लिए, अगले महीने शायद मैं कुछ और करूंगा. तो वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा था कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ कि वो सिंसियरिटी कमी थी, स्पेशली वो टोनैलिटी की कमी थी, वो प्रोफेशनलिज्म की कमी थी. सो देन वी स्टार्टेड ऑनबोर्डिंग प्रोफेशनल ट्यूटर्स हु आर गुड, मे नॉट बी ग्रेट एट द होल सब्जेक्ट, बट डेफिनेटली वेरी amazing even at one topic. So that's why we say that we have got India's best tutors, because हमारे पास बच्चे एक टॉपिक लेवल पर आ रहे हैं, तो हमारे पास उस टॉपिक का तो बेस्ट बंदा है, तो वहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. एंड प्लस ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ उसको टॉपिक का बेस्ट बंदा, उसको पूरा इंडिया कह रहा है, और अगर वो बेस्ट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो प्रायोरिटी में नीचे जाएगा एंड शायद फिर वो प्लेटफॉर्म से बाहर भी निकल जाए. सो दैट्स वाई आज के डेट में हमारे मोर देन आई थिंक 70% tutors are precisely professional tutors. We have got grads from top colleges, postgrads, even PhDs. So people who are pursuing PhD, they are normally very sincere to their job. So I love people who are pursuing PhD because they're very deep in their subject, they're very professional, and plus they have a sense of empathy. What does a session look like? It's just a video call. Is the tutor able to write something? It looks like exactly how we are talking. Yeah. Plus there's also a green board जहाँ पे बंदा ऐसे ग्रीन बोर्ड पे भी लिख सकता है,
a digital board or can be writing, let's say, on a notebook and hold the camera from the other hand. तो tutors भी mobile से करते हैं या they use a laptop? Like how do they? So most of the tutors use mobile phones. Some of them use tablet or some of them use laptops. And वो digital board मतलब वो phone के screen में ही they can like with their fingers write what they want to write. With their finger or with if they are a stylus. Got it. Okay. And what is the session duration? Like Session duration can move like from 2 minutes to even up to 20 minutes. Majority of our sessions are somewhere around 5 minutes. okay. It's on mutual consent. Like whatever the student and teacher feel they can. Normally it's driven by what the students feel, because if they understood in 5 minutes, 4 minutes, they are like, fine, move on. Tell me about the numbers. What kind of revenue are you currently doing, and how many sessions happen, or how many students do you have? How many paying students do you have? And like how that has evolved since you started? So in terms of number of sessions, so somewhere around December, we were doing 30,000 sessions. And today we are doing 60,000 sessions a day. So that's the trajectory we are at. I'll tell you like this. So last week, we increased our subscription price by almost 50%. And normally people would expect that there would be a drop in the number of sales or the number of daily subscribers. Our numbers of daily subscribers, of course, our premium users, that rose up by 100%. So currently, frankly, we have not actually gotten into a complete monetization race, or you can say a complete business flow of monetizing things. We are doing these little experiments just to understand how much customer love do we have, how much product love do we have. So these parameters are really important for us. And maybe like in 4 to 5 months, once we mature the product even further, we may have to even further increase our subscription pricing. Like one student, when he pays that $750 for a month, how many sessions does he take in a month on an average? What is the consumption rate? It depends on the student. There are students who literally sleep with us. Who are literally doing 10 to 15 sessions a day. And then there are students who may require us 10 to 15 times a month. And then there are students who may require us maybe right before the exam, right before their test. So it's a very wide spectrum. How many minutes does it take for a session to become available for a student? Is it like within a minute, or like what is that average time? Like once I put it down? Around 80% of our sessions get connected in less than 10 seconds, 10 to 15 seconds. But we, just to be on the safe side, we say that, okay, we are a 60-second platform. We connect you in 60 seconds because most of the time it happens like very fast. And so I'm guessing that the way to grow here, you need to, the supply side, which is the tutor, would be like a key thing for growing, right? Because maintaining that 10-second thing means you need to have a lot of very good quality supply on the platform. I'm assuming because you're getting organic sales. So which means that the demand is there. If you create good quality supply, then the growth will continue to happen, right? Absolutely. We are the only Edtech without a sales team in the country right now. So all our focus, all our attention is with tutors. So I have been a tutor all my life. So obviously I'll always be biased towards tutor. So I have our top line managers and analysts, and even Rohit for that matter, is totally bullish on ensuring that our tutors are happy, and plus they ensure that students who talk to them, they feel happy. So of course, tutor for us is everything. If we maintain the quality, automatically students will come. So we are a student-centric company, but to be a student-centric company, we have to have a very strong focus on our tutors. And so tell me about your expansion. Are you looking to go to Dubai also, or are you going outside India? Yeah, we have already started expanding in Middle East. Yeah, and Dubai is basically our Middle East regional headquarters. So we are building team here, and we are getting amazing response from students. People are literally going, they say, boss, ye magic hai kya ye? I'm like, haan, ye magic hi hai. And you're tapping the Indian tutor population only, or you're like onboarding tutors from Dubai? Currently Indian tutors, but we are looking to onboard even tutors outside India as well. But there your pricing would have to be different, because then a tutor in Dubai would not come at the same price as a tutor in India. Yes. वो तो मतलब जहाँ की जैसे economics है वो तो pricing वैसी बन जाती है. Right. So why did you decide to go international so soon? It's pretty early in your journey, no? So why is so soon? Within a year, we are doing 60,000 sessions a day. So soon तो हम वहाँ पर भी हैं. And as I told you, as a founder, I'm little aggressive. So when I was writing first few page of the product, the whole target was that it is going to solve learning problem across the globe. So actually मैं आया नहीं, मैं बुलाया गया हूँ दुबई, because बिना marketing किए हुए हमें दुबई से
1000 restaurant मिल गए. That's why last week even Consulate General, His Excellency, he felicitated us, our team in Dubai, and we are really looking forward to create this opportunity for our restaurants in India, for our tutors in India, so they can teach students in Middle East, and by that virtue, so we'll start exploring other countries as well. And so tell me about the funding journey that you've had so far. So you raised that one seed round from Better Capital. Then again, Better Capital again said कि अच्छा काम कर रहे हो. So first time Better Capital moved out of its comfort space and said कि हमें actual में एक बड़ा round करना है. So then they did a seed round with us. And then very quickly we did our Series A from Anthos Capital. The Series A was, I think, $23 million, right? Yeah. Okay. Which is a pretty massive round. So did you, like, how did you achieve this? Was it on the basis of the traction, the growth in numbers? Or? Of course, like growth and numbers were one parameter of it. So we did a disruption at multiple parameters. We did a disruption in NPS. We did a disruption in retention. We did a disruption in restaurant product love and the reviews. And plus, we have the ability to scale very fast. So I can go and open a country in like 1 week. So all these, you can say, factored in has been some crucial pillars of our growth journey. And currently, what do you do marketing spend for getting students, or is it all organic, or like what is the ratio which is organic? अभी all organic तो नहीं है. So it is somewhere around, you can say 50 to 60%, 50 to 60% is organic. The rest is we have to do some marketing on YouTube and the conventional channels. Like typically your approach would be if someone is typing a question like, what is Newton's law? And then you would... Then ideally we should be there. But वहाँ पर SEO की बहुत बड़ी fight है. And there are a lot of big players who are very deep pocketed. तो वहाँ पर betting होती है and वो betting काफी ज़्यादा high है, especially on the keyword. But it's okay. We are working on our own way to crack the SEO. And yeah, let's see how it goes. What is the retention rate like? Like normally students pay month on month, or do they pay annual package, and how many, like what is the churn that you see? For example, our month 7 retention is somewhere around 67%. So that's why I told you, like we are breaking barriers in terms of these data. तो अभी पहले क्या था कि पहले हमारा the most sold and sought after subscription was our monthly subscription. Now our 3-month subscription has become the most sought after. Slowly the target is that automatically, और ये सारा organically हो रहा है. And especially you can imagine that India in edtech wise is very cluttered, very chaotic market where a lot of big whales are sitting with too much of, you can say, information around them. And फिर वहाँ पर for early stage player like us to survive, it's pretty challenging, pretty scary also in a way. But if you look at that perspective, then I think we are doing phenomenal. So currently there is no direct competition you have, right? There's nobody who's doing this like on demand. Yeah, we have no competition. Yeah, we have no competition. Amazing. Okay. So what's on the roadmap? What are the key challenges you want to solve over the next 1 or 2 years? See, in India, one is definitely we want to go vernacular. The prime challenges which we really want to impact and solve is that normally students are afraid of going to classes because they feel कि कहीं ना कहीं टीचर उनको किसी न किसी वर्ड के लिए पकड़ लेगा और वहां पे हो जाएगी बेइज्जती. अपने को डर से ज्यादा बेइज्जती का टेंशन होता है, right? We want to solve this problem that students go to classes with full confidence. तो उनके और उनके टीचर के बीच का जो गैप है ना, we want to keep on pumping our tutors to reduce and minimize that gap as much as possible. And then we'll just become a household name. Secondly, you can say the other part of the table is our tutors. So we really want to solve this problem that if someone wants to become a teacher, अभी उसके पास कुछ भी नहीं है. For example, if you want to become a teacher, it's a long journey. आपको पता नहीं कौन आपको accept करेगा कौन नहीं करेगा. So we want to solve this problem that if someone has sufficient knowledge, then how we can give that one person an opportunity to teach. And secondly, how we can increase his or her output in the least possible amount of time and make him a competent teacher and then put him in front of right set of students who fit with his capabilities. Okay. So basically you want to create a process flow through which somebody who has the basic knowledge about the subject can come in and then become an expert teacher after going through your onboarding program and start earning. So it becomes a way for people to unlock earning, like somebody sitting in a tier 2, tier 3 location where they don't have access to other jobs. This can be a way for them to
start earning. Forget tier 2, tier 3, even someone who is sitting in tier 1. आप दिल्ली में रहते हो, you cannot go and take a walk and think कि हाँ मैं साउथ दिल्ली में जाके पढ़ा सकता हूँ. कैसे पढ़ाओगे आप बॉम्बे में बैठे हो, बैंगलोर बैठे हो. So it's more than a geographic problem तो है ही, but more than that it's a problem of a skill, because आपको किसी ने ये नहीं बताया कि कौन आपसे पढ़ना चाहेगा, किसके लिए आप बेस्ट हो. एंड प्लस लोगों को ये फीडबैक होता है कि तुम अच्छे टीचर नहीं हो, बस ये फीडबैक मिलता है, तुम अच्छा नहीं पढ़ा सकते. ठीक है, बहुत इजी है बोलना. अब मैं क्या करूं? सो वी आर इन्वेस्टिंग इन दोस पैरामीटर्स जिससे कि लेट्स से इफ समवन रिक्वायर्स 50 पैरामीटर्स, क्या है वो 50 पैरामीटर्स? सो वी आर क्रिएटिंग दैट एज अ साइंस. और वो पहले से था, ऐसा नहीं कि वो हम इन्वेंट कर रहे हैं. वी आर क्रिएटिंग दैट एज अ सर्विस. And that brings us to the end of this conversation. I want to ask you for a favor now. Did you like listening to this show? I'd love to hear your feedback about it. Do you have your own startup ideas? I'd love to hear them. Do you have questions for any of the guests that you heard about in this show? I'd love to get your questions and pass them on to the guests. Write to me at ad@thepodium.in. That's ad@thepodium.in.